Hello everyone and welcome back to Commerce Aptitude. Dear learners, today we are going to learn another important topic of fundamentals of financial management, that is functions of financial management. And this is the lecture number 2 of the subject fundamentals of financial management. Before starting our today's discussion, I suggest each and everyone to go to the description box below. I have already shared or given the important links there. So just go and access all those links. Okay. So without wasting much more time, let's get started our today's discussion on functions of financial management. So dear learners, no doubt a financial manager has to perform various functions or various activities in an organization or in an enterprise. Okay, and this is called the functions of financial management. Either you call the functions of financial management, or you call the functions or roles of financial management manager. Both are remain same. Okay, so it doesn't matter. Today, we are going to discuss top 8 functions of financial management as you see on your screen. First, determining financial need. Second, selecting the sources of funds. Third, financial analysis and interpretation. Fourth, cost, volume, profit or CVP analysis. Next, capital budgeting. Next, working capital management. Next, profit planning and control. Next, dividend policies or dividend policy. Okay, different books को जदि follow करूचंती, you may get different types of functions, but these are the common functions a financial manager has to perform. Remember this, and one after one we will cover all the points in a detailed discussion. Okay, so stay uh, stay in the video, stay in the class till the end, and I can surely say that after watching this class, after attending this class, you will definitely learn something special about the functions of financial management. Okay, so let's start with the first function, that is determining financial needs. In the introduction class, we have learnt that how finance is important for an enterprise. Okay, we have already stated that finance is the lifeblood of an organization, and without finance or without it, an enterprise cannot survive in the market. এটা ଆମେ ପଢିଥିଲେ. Okay, so ଆଜି जो प्रथम फंक्शन ଆମେ पढुचे, that is determining financial needs. Financial need ର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିଛି, କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାର ଡିଟରମାଇନ୍ କରିବା ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମ୍ୟାନେଜର ଅର୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଫଙ୍କସନ୍. ଓକେ, ଫାଇନାନ୍ସ ଆର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ମିଟ୍ ଦି short term needs or the long term needs of the organization. Promotional expenses, ओके, जोड़ाक सर्ट टर्म भी आम कहीपर, फिक्स्ड कैपिटल, जो फिक्स्ड एसेट को परचेस करने कैपिटल दरकार, देन शॉर्ट टर्म ओब्लिगेशन को फुलफिल करने वर्किंग कैपिटल दरकार. सो दीज आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फाइनेंस. एथिपाई फाइनेंस गुड़िक दरकार. ओके, एंड आमे डिसाइड करबा जे एक्चुअली को इंडस्ट्री पाई केते फाइनेंस दरकार. ओके, सो फिक्स्ड एसेट परचेस करबा पाई काहा पाई केते टंकार फाइनेंस दरकार, इट इज डिपेंड अपन द साइज ऑफ द इंडस्ट्री. बुझी पारिले, एटे हम पढ़ी कि बेटा देखौची. सी, a manufacturing concern will require more investment in fixed asset than, एटा टिके मिस्टेक हो जाइछि टाइपिंग रे, देन ए ट्रेडिंग कंसर्न. गोटे ट्रेडिंग कंसर्न अपेक्षा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रो फिक्स्ड एसेट ऊपर इन्वेस्टमेंट अधिका लागि थाए. ओके, एंड जदि आमे वर्किंग कैपिटल कथा कहबा ताहले कोठी अधिका वर्किंग कैपिटल लागि थाए ना जहार स्केल अधिका. ओके, सो द ऑर्गेनाइजेशन which has higher scale require higher working capital. ए दीटा कथा मन रखिथिबे. फिक्स्ड एसेट परचेज
को इंडस्ट्री पे अधिका इंपोर्टेंट एंड वर्किंग कैपिटल रो आवश्यकता कहा पई अधिका इंपोर्टेंट. ओके. एंड रॉन्ग असेसमेंट जदि करा जाउची या रॉन्ग असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल नीड्स में jeopardize the survival of a concern. Jeopardize means one type of problem create करे दबा. Okay. सो फर्स्ट इज द डिटरमाइनिंग ऑफ फाइनेंशियल नीड. कोई इंडस्ट्री पाई को टाइप रो फाइनेंशियल नीड्स रो आवश्यकता रही सेटा आसेस करिबा गोटे फाइनेंशियल मैनेजमेंट रो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. बिकॉज आम जाचे फाइनेंस बहुत पर्पस पाई दरकार जमती मु कहली प्रमोशनल एक्सपेंसेस हो गला बा आम ऑर्गेनाइजेशन रे डे टू डे एक्सपेंडिचर को मीट करबा पई हो गला बा लॉन्ग टर्म पर्पस पाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पाई भी फाइनेंस दरकार. सो देयर आर डिफरेंट नीड्स ऑफ फाइनेंस and how much is required for which kind of industries, it will depend upon different things. Okay. A manufacturing concern require more investment in the fixed asset than the trading concern, and the working capital needs depend upon the scale of operation. Larger the scale of operation, the higher will be the needs of working capital. एतिकी मने रखंतु प्रथम फंक्शन रे. ओके. इम्पोर्टेंट जो लाइन लगे सेटा को एग्जाम पाई नोट करेंगे. बाकी गुड़ी को अंडरस्टैंडिंग पाई दरकार. नेक्स्ट जीवा सिलेक्टिंग द सोर्सेस ऑफ फंड्स. Functions of a financial management or manager. Okay. There are number of sources are available to raising the funds, but the right source or picking of a right source is important thing, because where if you are picking the wrong source, it will have adverse impact on the business or the operation of the organization. Okay. So गोटे कंसर्न पाखरे गोटे ऑप्शन अच्छी जदि गोटे फार्म को लॉन्ग टर्म पर्पस पाई फाइनेंस दरकार. देखंतु सोर्सेस डिफरेंट टाइप्स रो अच्छी. ओके. डिफरेंट सोर्सेस अच्छी सॉरी फंड्स रो सोर्सेस डिफरेंट अच्छी. किछि सोर्सेस शॉर्ट टर्म पाई किछि सोर्सेस लॉन्ग टर्म पाई. जदि गोटे ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म पर्पस पाई फंड्स दरकार फाइनेंस दरकार ताले सेमाने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अछंती तांकू रिक्वेस्ट करिवे. ओके. बॉडीज अछंती इंस्टीट्यूशन अछंती हु प्रोवाइड्स लोन, तो सेमाने को रिक्वेस्ट करिवे फॉर द लॉन्ग टर्म फंड. एंड जदि गोटे ऑर्गेनाइजेशन को बा एंटरप्राइज को शॉर्ट टर्म पर्पस पाई लोन दरकार टू मीट द डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस व्हिच इज कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल, देन सेमाने कमर्शियल बैंक्स मानक सहित कांटेक्ट करिवे एंड इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एई माध्यम रे सेमाने शॉर्ट टर्म कैपिटल बोरो करिवे फ्रॉम द कमर्शियल बैंक. ओके. And a financial manager has to be very careful and cautious in approaching different sources. एवं आमे जानिचे लॉन्ग टर्म सोर्सेस जो गुड़ाक रही जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दियंती से लॉन्ग टर्म सोर्सेस गुड़ाक एक्चुअली कौन को फॉर्म रे फंड्स आसी परिबो. डिवेंचर अच्छी शेयर कैपिटल अच्छी लॉन्ग टर्म लोन अच्छी प्रिफरेंस शेयर्स अच्छी एंजल इन्वेस्टिंग वेंचर कैपिटल एमती बहुत गुड़े अच्छी. शॉर्ट टर्म कहला माने जमिति आमे एटी कहले जो कैश क्रेडिट है बैंक ओवरड्राफ्ट है एमती डिफरेंट शॉर्ट टर्म सोर्सेस रही. सो सिलेक्टिंग द करेक्ट सोर्स ऑफ फंड्स is the important or is an important task for a financial manager. This is the second function of the financial management. याको मने रखिबे प्रथमे डिटरमाइन करा गला फाइनेंशियल नीड, देन सोर्सेस को सेटी सिलेक्ट करा जिवो को सोर्स को हमें पिक करिबा. ओके. एडी पर्पस भी फुलफिल होचे हमर पर्पस कोन, देन पर्पस देखि सला परे हमें सोर्स को बाछिबा. फाइन. Let's go to the third point, third important function, that is financial analysis and interpretation. So financial manager is expected to know about the profitability, liquidity position, short term and long term financial position of the concern. प्रत्येक मैनेजर जानिबा को चाहिए ये चारिटी कथा. ओके. and for this purpose a number of ratios, number of calculations have to be concerned or have to calculated. Okay. बहुत गुड़े रेशियोज रही. रेशियोज तो ऑलरेडी आप जानिथिबे फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग रे पढ़िथिबे. तो बहुत गुड़े रेशियोज कैलकुलेट करा जाए असेसमेंट करा जाए टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी लिक्विडिटी पोजीशन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंसर्न. ओके. and the interpretation of various ratios is also essential to reach a certain conclusion. गोटे निर्दिष्ट मतामत रे पहुँचवा को हेले डिसीजन नबा को हेले से रेशियोज गुड़िकर इंटरप्रिटेशन करबा निहाती दरकार. ओके. इंटरप्रिटेशन इज अदरवाइज कॉल्ड एज ए कंक्लूजन. ओके. ड्रॉ ए कंक्लूजन.
Financial analysis and interpretation has become an important area of financial management or functions of financial management. The financial manager कौन करे जो different questions रो answer पाई business रो status जानिबा पाई financial position जानिबा पाई कौन करा जाए ना financial statement रो analysis and तार interpretation करी थाए. ओके तो ये होची तारा थर्ड फंक्शन. नेक्स्ट cost volume profit analysis or shortly we can say the CVP analysis. Okay, CVP analysis. CVP means the relationship between cost, volume means sales and profit. तीनोटी भितर रिलेशनशिप को आमे CVP analysis बोली कही थाउ. So CVP analysis answer questions like को question answer दे थाए. What is the behavior of a cost and volume? Behavior of a cost and volume माने जानिले sales and behavior cost माने which kind of cost. जेमती फिक्स्ड एसेट सहित सेल्स रिलेशन कौन, वेरिएबल सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट सहित वॉल्यूम रिलेशन कौन, वेरिएबल कॉस्ट सहित वॉल्यूम बा सेल्स रिलेशन कौन, सेमी वेरिएबल कॉस्ट सहित वॉल्यूम बा सेल्स रिलेशन कौन, यही टाइप रो क्वेश्चन आंसर दे थाए सीवीपी एनालिसिस. आउ कौन करी थाए एट व्हाट पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन ए फार्म विल बी एबल टू रिकवर ऑल इट्स कॉस्ट. केते लेवल पर्यंत प्रोडक्शन को नेले प्रोडक्शन केते कले गोटे फार्म तार सबुतिक कॉस्ट को रिकवर करि परिबो, से जेतिकी भी खर्च करिछि से खर्च गुडी को रिकवर करि परिबो, तार पूरण करि परिबो. आउ कोन क्वेश्चन आंसर मिली थाए हाउ मच ए फार्म शुड प्रोड्यूस टू अर्न ए डिजायर्ड प्रॉफिट. तो गोटे डिजायर लेवल रो प्रॉफिट अर्न करबा को हेले मनकर एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ए फार्म वांट्स टू अर्न. So to achieve those desired profit, how much a firm should produce, what should be the level of production, केते प्रोडक्शन करिबा दरकार सो दैट सेही एक्स अमाउंट प्रॉफिट रो टारगेट को फुलफिल करा जाई पारिबो. एई सब क्वेश्चन रो आंसर देई थाए कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस. तीनटार रिलेशनशिप को एटी देखा जाए. ओके एवं मेनली एटी जो कॉस्ट रो बिहेवियर अछि ताकू भी बढ़िया भाव में स्टडी करा जाए. फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट. ओके देन सब बेले गोटे फाइनेंशियल मैनेजर टार्गेट रखे जे जेते शीघ्र हो पारिबो से ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव करिबो. ब्रेक इवन गोटे एमिति पॉइंट जोटी सेल्स वॉल्यूम सॉरी कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू. जेतिकी खर्च होइछि सेतिकी रेवेन्यू आसीगला एवं आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ भी प्रोडक्शन हम से जहाँ भी अर्निंग आसीबो दैट विल बी द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके तो समस्त चाहती केमिति ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी आसू एवं ता पर स्टेज रे फर्म केमिति गोटे अधिकरु अधिक प्रॉफिट अर्न करिताउ. ओके तो एटी आउ गोटे सेंटेंस लिखा जाइछि दिस एनालिसिस इज वेरी हेल्पफुल इन डिसाइडिंग द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, केते आउटपुट प्रोड्यूस हवा दरकार और सेल्स एका कथा and is essential for taking important decisions about production and profit. तो प्रॉफिट एंड प्रोडक्शन रिलेटेड मध्य इंपोर्टेंट डिसीजन निया जाई पारे थ्रू दिस एनालिसिस. सो एटा अनदर इंपोर्टेंट फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जे सीबीपी एनालिसिस टी करा जाई थाए फाइनेंशियल मैनेजमेंट रे. ओके नेक्स्ट कैपिटल बजटिंग. सी capital budgeting is the process of making investment decision in capital expenditure. And what is capital expenditure? The expenditure okay on the fixed asset, the benefit of which fixed assets or long term investment, the benefit of which are expected to receive over a number of time or over a time period of time exceeding 1 year. The capital budgeting hochi nothing but an investment of long term proposals, long term projects ता ऊपर इन्वेस्ट करने को आम कैपिटल बजेटिंग बोली कही था. तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर से एका कथा कैपिटल एक्सपेंडिचर बा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट रु बेनिफिटा आमको गोटे वर्ष मिल न थाए बट एक रु एकाधिक वर्ष पर्यंत मिली थाए. सपोज तुम गोटे फिक्स्ड एसेट परचेस कल लाइक गोटे फ्रिज परचेस कल घरे यूज करने तो से फ्रिज रु रेफ्रिजरेटर रु कौन बेनिफिट गोटे वर्ष जाए मिल नो मोर देन 1 ईयर जाए मिल. सेमिति लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट रे
लॉन्ग टर्म प्रपोजल गुड़िकर इन्वेस्टमेंट जो करा जाए से बेनिफिट बहुत समय धरिकी मिली थाए तो ସେଇଟା ମଧ୍ୟ डिसाइड करा जाए केमिति कैपिटल एक्सपेंडिचर करा जिवो डिफरेंट प्रपोजल्स थिबो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स थिबो बट ऑन व्हिच इन्वेस्टमेंट ए फर्म शुड invest, okay, or on which project a firm should invest, that will be decided in कैपिटल बजेटिंग डिसीजन से डिसाइड करा जिवो पांचटी प्रोजेक्ट अच्छी को प्रोजेक्ट आम इन्वेस्ट करवा सो दैट कम समय भितर अधिका रिटर्न आम पाई परिबा So the crux of capital budgeting is the allocation of available resources to various proposals. The crucial factor which influences the capital budgeting decision is the profitability of the prospective investment. There are different techniques or methods are available for the capital budgeting decision that we are going to study on the next chapter or the next unit. Such methods are payback period method, rate of return method, net present value method, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड एक्सेट्रा एसबूर व्यवहार करके कैपिटल बजेटिंग रो डिसीजन निया जाता है तो एति कथा मन रखंतु कैपिटल बजेटिंग डिसीजन नेला बेले फाइनेंशियल मैनेजमेंट रो व्यवहार करा जाए बा गोटे फाइनेंशियल मैनेजर कैपिटल बजेटिंग रो डिसीजन टी नहीं थाए ओके तो ये खाली बुझे को पड़ो कैपिटल बजेटिंग कौन कैपिटल बजेटिंग जो कहगला कैपिटल एक्सपेंडिचर सेटा कौन बस को डिसीजन जो कैपिटल बजेटिंग रो डिसीजन नेला बेले कौन कौन मेथड्स अवेलेबल अच्छी एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक राइट कैपिटल बजेटिंग डिसीजन सेति बुझीबार अच्छी बास management. We know what is working capital. Working capital is nothing but the short-term requirement of a funds of an organization to meet the day-to-day expenditure, day-to-day expenses. गोटे ऑर्गेनाइजेशन रे दैनंदिन रे जो खर्च गुड़िक होउची मीन्स purchase of a raw material, to purchase raw material, to purchase inventories, to meet the expenses like wages, salaries, rent, electricity bill. एथिपाई शॉर्ट टर्म लोन सॉरी शॉर्ट टर्म फंड्स रो आवश्यकता पड़ी थाए से फंड को आमे वर्किंग कैपिटल कही थाउ एंड इट इज वेरी इंपोर्टेंट टू मैनेज दी वर्किंग कैपिटल केते वर्किंग कैपिटल गोटे फार्म पाखरे सब बेले रहिबा दरकार दैट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन ओके अधिका कैपिटल रहिले भी सेटा खराब and insufficient capital रहिले भी that will have adverse effect on the operation of the management जदि वर्किंग कैपिटल आवश्यकता थिबो एंड वर्किंग कैपिटल नथिबो ताले ऑपरेशन हेई परिबोनी एंड अननेसेसरी आमे वर्किंग कैपिटल को बढ़ई की रखिबा जदि जेमिति गोटे एग्जांपल देबी आमे इन्वेंटरी माध्यम रे वर्किंग कैपिटल बढ़ई परिबा आमे कहबा जे आमो पाखरे जेति की इन्वेंटरी स्टॉक थिबो सेटा गोटे टाइप रो वर्किंग कैपिटल बिकॉज ताकू सेल करिकी कैश रियलाइज करा जाई परिबो तो अधिक वर्किंग कैपिटल सकाई आमे जदि सपोज कर अधिक इन्वेंटरी प्रोडक्शन करिकी रखीदेले तार जदि सेल होनी ताले प्रॉब्लम कौन हम ताकू रखिबारे अननेसेसरी खर्च हम ना ना आ जदि ताकू सेल करदेले ऑन क्रेडिट बेसिस सेठू जदि पैसा न आसिला बाकी गुड़िक रियलाइज न होउची ताहले अननेसेसरी ब्लॉकेज ऑफ कैश हो गला सेठी कैश रो ब्लॉक हो गला पैसा आसुनी तो सब बेले ध्यान रखा जाए जे वर्किंग कैपिटल टी केमिति रेज करी हबो केते परिमाण रो वर्किंग कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन सब बेले मेंटेन करा जिवो एटा गोटे फाइनेंशियल मैनेजर रो इंपोर्टेंट टास्क ओके फॉर्म रे इन्वेंटरीज फॉर्म रे ओके रिसीवेबल्स जो रही बिल्स रिसीवेबल यही फॉर्म रे रखा जाए तो पढ़िबे टिके तापर जीवा 7th पॉइंट दैट इज प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल वी नो व्हाट इज प्रॉफिट प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू और सेल्स ओवर एक्सपेंडिचर डिटरमाइन ओवर एक्सपेंडिचर यस आमे जेतिकी सेल कले सपोज आमर खर्च होइची 10 टंका गोटे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करिबारे ताको 12 टंका रे सेल कले सो 2 टंका एठार हे जिवो प्रॉफिट एटा सिंपल थिंग आमे छोट बळु पढी आसुचे एंड वी नो द कोर ऑब्जेक्टिव द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट एंड टू मैक्सिमाइज इट एवरी ईयर प्रॉफिट अर्न करिबा एवं प्रति वर्ष अधिकारु अधिक प्रॉफिट अर्न करिबा ए वर्ष 10 टंका हेले आरा वर्ष 15 टंका प्रॉफिट तार वर्ष 25 टंका प्रॉफिट रो मैक्सिमाइजेशन करिबा एटा प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन रो गोटे कोर ऑब्जेक्टिव बा कोर गोल ओके एंड गोटे फाइनेंशियल मैनेजर विल हेल्प टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव ओके मीन्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट टू अर्न द प्रॉफिट एंड टू कंट्रोल द प्रॉफिट रो कंट्रोल भी करा जिवो
एमती नुहे मन इच्छा प्रॉफिट अर्निंग करने पर्पस किसी ना किसी कर दिया जीवो नो सी प्रॉफिट इज द क्रुशियल थिंग ऑफ एन एंटरप्राइज बहुत इंपोर्टेंट जिनस कौन पाई बिकॉज यही प्रॉफिट रु डिविडेंड डिक्लेयर करा जाए केते डिविडेंड दिया जीवो शेयर होल्डर्स मानू प्रॉफिट डिसाइड करे सरप्लस फंड केते तैयारी करा जिवो सो दैट फर्दर इन्वेस्टमेंट करबा पई पैसा रखा जिवो निज पाखरे एटा प्रॉफिट रु जणा पड़ी थाए प्रॉफिट ऊपर डिपेंड करे केते टंका टैक्सेशन दिया जिवो टैक्स दिया जिवो टू द गवर्नमेंट एटा भी प्रॉफिट ऊपर डिपेंड करे सो हमें कहि परिबा प्रॉफिट विल हैव डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ऑन डिफरेंट डिसीजंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो यार कंट्रोल करबा निहाती दरकार बुझी पारले एंड आमे प्रीवियस पॉइंट रू भी देखिले सीवीपी एनालिसिस and break-even analysis are two major techniques by using of which a financial manager can control the profit or can take the important decision regarding profit एतिकी मने रखंतु next dividend policy on this policy a financial manager or in financial management it will be decided that how much profit should be distributed among the shareholders as the dividend because they invest their money into the business for certain return okay and that return is called the dividend ସେମାନେ पैसा पुंजी निवेश କରିଥାନ୍ତି କିଛି return purpose ପାଇଁ କିଛି reward purpose ପାଇଁ ସେଇ return को ଆମେ dividend ବୋଲି କହିଥାଉ ओके नॉट होल रिटर्न बट सर्टन एक्सट्रा रिटर्न 100 टंका लगेले तो 110 टंका पाइबे ना से 10 टंका एक्सट्राटा कौन डिविडेंड बुझी पाले ना तो प्योरली हमें पूरा डिविडेंड रो मीनिंग को हमें जाऊ ना डिविडेंड तो पूरा एक्स्ट्रा अमाउंट एडिशनल अमाउंट नुह सेटा तो प्रॉफिट हो बट मझिरे मझिरे जो इंटरेस्ट टाइप रो पे करा जाए शेयर होल्डर मानक दैट इज कॉल्ड डिविडेंड तो समस्त चाहते आम केमती अधिकार अधिका डिविडेंड पाइबा तो ये गोटे प्रोब्लेम हो जाए कौन प्रोब्लेम a shareholder always wants to earn more dividend and at the same time a management or an enterprise wants to hold the funds for the further investment retain the fund for the further investment dividend न देकी से पैसा को further investment पे रखे सो यही जो contradictory एम रहिला ता पे बहुत गुडे प्रोब्लेम मध्य क्रिएट हो जाए सो डिविडेंड पॉलिसी बनैबा निहाती दरकार दैट हाउ मच प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड एंड हाउ मच प्रॉफिट शुड बी रिटेन्ड इन द बिजनेस एज ए सरप्लस फंड फॉर द फर्दर इन्वेस्टमेंट एटा डिसाइड करने को ही आम डिविडेंड पॉलिसी बोली कही था एंड गोटे इंपोर्टेंट डिसीजन जोटा कि गोटे फार्म नेबा निहाती दरकार ओके सो ये थिला हमर टॉप 8 फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एवं जदि भल भाव देखिबा आमे जो तीनोटी इंपोर्टेंट डिसीजन विषय में पढ़ी इन्वेस्टमेंट डिसीजन फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड ये 8टी पॉइंट से तीनोटी डिसीजन भी कवर हो जाउची ओके डिविडेंड पॉलिसी डिविडेंड डिसीजन विषय डिस्कस करले देन जो कैपिटल बजेटिंग है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है एगुड़िकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन कथा आसीगला ओके देन ये जो आम प्रथम डिसाइड कले फाइनेंशियल नीड सोर्सेस एगुड़िक फाइनेंशियल डिसीजन कथा आसीगला आ जब डिटेल पढ़ो तो आउ गोटे भी डिसीजन अच्छी जोटा लिक्विडिटी डिसीजन बट सेटा से इन्वेस्टमेंट ही गोटे पार्ट ओके सो एतिक थिला आज डिस्कशन देखा हम नेक्स्ट क्लास रे गोटे नुआ डिस्कशन सहित जदि एथरे किछि डाउट अछि देन यू कैन सिंपली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो आई कैन डेफिनेटली गेट यू फीडबैक ओके और गिव यू फीडबैक एट देयर ओके सो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिकी जनइबे निजर डाउट बाकी देखा हम नेक्स्ट क्लास रे टिल देन हैव ए नाइस टाइम एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास टिल द एंड फ्रेंड्स।